So hello and welcome back to my channel guys. As you have observed from the thumbnail that what we are going to talk about in this video, so you are definitely correct. We are going to talk about iPhone 16 Pro. तो हम काफ़ी सारे रूमर्स और काफ़ी सारे लीक्स अभी अभी से ही सुनते हुए मिल रहे हैं हमें कि क्या होगा iPhone 16 का लुक एंड फील, क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या बदलाव किए जाएंगे। तो डेफिनेटली हम इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि क्या क्या सच है और क्या क्या झूठ। बेसिकली वी विल एनालाइज द न्यूज़, रूमर्स एंड लीक्स टू गेट द कंक्लूजन ऑफ iPhone 16 Pro। क्या सच होगा, क्या झूठ होगा और क्या, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। बेसिकली इन द करंट टाइम एप्पल इज फेसिंग सम इश्यूज फ्रॉम द कस्टमर्स दैट दे आर कंटिन्यूसली कंप्लेनिंग अबाउट द बैटरी प्रॉब्लम। तो काफी तरफ से हमें न्यूज़ और रूमर्स में देखने को मिला कि iPhone 15 में थोड़ी हीटिंग इश्यूज वगैरह देखने को मिल रही हैं। और हालांकि काफी आईफोन्स, प्रीवियसली आईफोन्स में भी ये इश्यूज रहे हैं, बट दे आर नॉट quite acceptable cause you are giving the same quality over and over again in the iPhone, so it will be not be acceptable from anyone. तो बेसिकली काफ़ी ऐसा सुनने को आया। तो अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि जो भी चेंजेस होंगे वो बेसिकली मोस्टली विल बी इन दी बैटरी पार्ट। बिकॉज अगर आप आईफोन यूजर हो तो आप ये इशू समझ सकते हो, क्योंकि जब भी हम आईफोन लॉन्गर टाइम के लिए रन करते हैं या फिर कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं तो हाँ, वहाँ डेफिनेटली हीटिंग इशू रहता ही रहता है। तो हाँ, मे बी इन दी आईफोन 16 दे विल फिक्स दिस प्रॉब्लम। बात करते हैं इसके कैमरा मॉड्यूल के बारे में। तो ये क्वाइट सिमिलर है आईफोन 11 की तरह। बताया ऐसा जा रहा है कि ये आईफोन 11 के प्रॉपर लुक में आएगा, क्योंकि इसको स्पेशल वीडियोस देने होंगे एप्पल विजन प्रो के साथ, क्योंकि ये कंपैटिबल हो जाएगा और उसके साथ उस तरह की वीडियोस वो निकाल पाएगा मोस्टली सुटेबल कंपैटिबल हो एप्पल विजन प्रो के साथ। तो हाँ, एप्पल ने कुछ सोच के ही किया होगा। बट आईफोन 11 यूजर आर टोटली एक्साइटेड टू कम दिस आईफोन। और बात करते हैं इसके एक्शंस बटन्स की। तो हाँ, एक नया हैप्टिक फीडबैक देखने को वहां पर मिल सकता है। बात करते हैं न्यूली एडेड थिंग की, वो है शटर बटन। ये एक न्यू बटन में भी इंट्रोड्यूस हुआ आईफोन 16 के साथ, जिसमें आप उस बटन के यूज से वीडियोस, फोटोज आराम से क्लिक कर सकते हैं। और पता नहीं क्या पर्पस हो सकता है, बट हाँ, कुछ रूमर्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं। So the iPhone 16 and iPhone 16 Plus are expected to use a A17 chip, but rumors suggest it won't be the same A17 Pro chip that is in the iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max. Apple is using TSMC's processors for the iPhone 17, so maybe iPhone 16 will have the A18 in the Pro model. But there are some rumors that they are saying that the same chip will be having with the non-pro models. But let's see, if it is having, that's very pretty good. So talking about its camera quality, which is having 48 megapixel ultra wide lens and which uses the pixel banding to combine the data from 4 pixels into one super pixel. So the image quality will be so much better with the iPhone 16 Pro Max. So I'm waiting for this because the photographer will love this feature, because if this is happening in the iPhone 16 Pro, so ultra wide lenses, the for the bloggers, for the YouTubers, will give some extra value added things. So as of now, I can't see any other rumors as of now. But if it will come. I will let you know definitely. And if you can see the screen, there are some little comparison between iPhone 15 and iPhone 16. So we'll have some idea that in how terms iPhone 16 is better than the iPhone 15. So thank you so much for watching this video, guys. Make sure you have subscribed, and I will have the next video over the topic named Android 15. So make sure you have subscribed, and thanks for watching this video.